I welcome you all to BCC 134 Block 3, Unit 9. We'll talk about Phillips curve, which will explain the inverse or negative relationship between the inflation rate or money wage rate and the rate of unemployment. Friends, in this chapter, we'll discuss about the Phillips curve and which explain the inverse relationship between the unemployment rate and the inflation. And after going through this chapter, we will be able to identify or know the various types of unemployment, and we will be able to explain the concept of natural rate of unemployment, and we will establish a relationship between the unemployment and inflation, discuss the concept of adaptive and the rational expectation, and we will also be able to explain how the short-term Phillips curve shifts. ଆମେ ଆଜି ପଢିବା ଏ ଯୋଉ ଫିଲିପ୍ସ କର୍ଭ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଆଲବାନ ୱିଲିୟମ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଫିଲିପ୍ସ କର୍ଭ ନାମିତ ହେଇଛି। 1958 ମସିହାରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ନ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଆଲବାନ ଆଲବାନ ୱିଲିୟମ ଫିଲିପ୍ସ, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ପ୍ରଫେସର ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟରେ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେ ଗୋଟେ ଫିଲିପ୍ସ କର୍ଭ he invented this Phillips curve in the year 1958. ଏଥିରେ ସେ କହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ there exists and a stable and inverse relationship between the inflation and unemployment. तापर से परवर्ती अवस्था अन्य इकोनॉमिस्ट माने स्टडी करले से मते देखिले से जो कहउछंती जे देयर एक्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दी मनी वेज रेट माने हमर मुद्रागत मजूरी आ जो अछि अनएम्प्लॉयमेंट बा बेकारी समस्या ए जो बेकारी रो ए जो रेट तार हार बेकारी हार आ जो अछि मुद्रागत मजूरी भितर जो संपर्क रहिछि ता होछि अपोजिट विपरीत संपर्क रही ए विषय से फिलिप्स कर्व वर्णना करते कि परवर्ती अवस्था फिलिप्स कर्व को प्रमाण करने अन्य इकोनॉमिस्ट मान स्टडी कर देखिले जेहेतु मनी वेज रेट रो चेंजेस जो हमर इन्फ्लेशन अरेंज कर कहले जे the modern Phillips curve has explained the inverse relationship between the unemployment rate and the inflation rate or the average rate of price changes. एक क्रम रे मो काले आपण मन बुझितली आगु बुझितला what is inflation, what is unemployment आज जस्ट मो आपण बुझितली से कहते a rise in money wage rate may be a cause and also an effect of inflation. So inflation and unemployment are interrelated. एटी टिके आपण बुझित चाहूची जे हमरो अगर बुझे inflation is a situation where there is a general and sustained increase in price of goods and services. बा मुद्रास्फीति सही समय को बुझाए से अवस्था को बुझाए जो अवस्था रे साधारण बाजार दर एवं निरंतर भाबे पूरा वृद्धि पाई थे एवं जो इन्फ्लेशन आल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रास्फीति समय रे हमर कहिछि टंकार विनिमय हार बा जहा कुंती विनिमय हार बा आमे जहा कुछु तार जो परचेज पावर बा किने क्षेत्र कम जाई थाए टंकार मूल्य अपपात बा टंकार मूल्य ह्रास पाई थाए। आ बुझिथिली जे इन्फ्लेशन मुख्यतः दुई कारण होता गोटे एक्सेस डिमांड आउट अछि राइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आम गोटे कहूँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन आउट कहूँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यह बुझे आज बुझेबी व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट माने अनएम्प्लॉयमेंट होची बेकारी अवस्था होची एभली एक अवस्था where a healthy person who is interested or willing to work but fails to find any work
ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ବା ଲେବର ବଜାର କହନ୍ତି ଲେବର ବଜାରରେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବ କିନ୍ତୁ କାମ ପାଉନଥିବ so when a person is healthy and able to work and when he is searching for work but does not find a work at the prevailing market rate of wage जे काम पाउने ताको आजो से लोकटी बेकार अछि बा अनपढ़ अछि এবং unemployment results in the loss of income to the family गोटे परिवार रो तार इनकम रो ह्रास पाइथाय कान बिकॉज ऑफ माने काई कहतली ना अनएम्प्लॉयमेंट जेतु नाही तार रोजगार रो जो आय रो सोर्स नाही रोजगार से बेरोजगार हे पड़े तेणु गोटे परिवार रो तार इनकम रो ह्रास होइतबा आय रो ह्रास होइताय unemployment was called it puts a person morally down man se को नैतिक भाव रे मुंडे समाज चाहि पारे मान बिनो रही पड़े आ कोन होची ना it results in a loss of valuable human resources the services of the unemployment or unemployed persons could not have been productively utilized in the production of goods and services तेणु बेकारी अवस्था बेले आमे मानव संबलर उपयुक्त भाव तार विनियोग कर अनएम्प्लॉयमेंट को बुझा जाए कि साधारणतः अनएम्प्लॉयमेंट बुझा जे यह हूँ इनवॉल्युंटरी अनएम्प्लॉयमेंट माने जन लोक वॉलंटरी से अनएम्प्लॉयड थी से अनएम्प्लॉयमेंट से इनवॉल्युंटरी माने कौन ना तार काम करबा इच्छा थिबो किंतु से काम पाउ नथिबो से वॉलंटरी से चाहूनी जे मु अनएम्प्लॉयड रही से वॉलंटरी चाहूँ काम करिवो किंतु काम मिले ताको हम कहूछु इनवॉल्युंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहूछु ताको अछि एटा तो अनएम्प्लॉयमेंट जन लोक काम करबा इच्छा थिबो किंतु से काम पाउ नथिबो बाजार मजूरी चालीछि से मजूरी जो मजूरी हार रे बा मजूरी दर रे से चाहूँ काम करे किंतु ताको काम मिलो नाही तेणु एटा कोछि बेकारी अवस्था Our labor force includes all persons in the age group of 16 to 64 years who are willing to work. ताको labor force. बोल मन तुम labor force रो अर्थ होची जे लोक माने काम करिया पई चाहउछंती एवं माने जो मानर बयस थिबो 16 रु 64 वर्ष भितरे एवं सेमान को आमे कहू कोना अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हम ता कहू एवं लेबर फोर्स हम ता कहू लेबर फोर्स माने कोन ना लेबर फोर्स माने होची जे एरा includes all persons in the age group of 16 years to 64 years who are willing to work but could not find any work तेणु लेबर फोर्स includes both employed and unemployed persons not included in the labor force include those who are retired persons or who are weak or who are ill or keeping housewives or simply not looking for work. Out of concern workforce अर्थ होची it is the concept which include only employed persons. तेतन हमें unemployment की कहा गया ना unemployment is the difference between the labor force and the workforce. But the rate of unemployment हमें बाहर करिबो it is a ratio of unemployed persons to the total labor force. मु आउट कहूची total labor force मान होची ना employed and unemployed एवं खाली unemployed person को हमें कोन कोचु ताको हम कोचु workforce कोचु तेनो workforce divided by the labor force is equal to rate of unemployment बा हमें कोचु rate of unemployment is equal to the unemployed persons divided by the total labor force. आउ एही प्रमाणे आमे देखिबो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गोटे होची फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट गोटे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और होची साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस because people switch over from one job to another job. But आम त कुछ घर्षण बा प्रतिरोध सृष्ट माने कोचु बेकारी घर्षण माने कोन फ्रिक्शन होची जे गुटे इकोनॉमिक किछ ऑब्स्टैकल होची माने आइदर माने ऑब्स्टैकल होची जे किछ इन्फॉर्मेशन नथिबो बा इम्परफेक्ट मार्केट थिबो से पई जे
mismatch between man लोक मान गोटे जगार लेबर दरकार होची किंतु लोक आसी पार नाथि तेणु frictional unemployment takes place because people switch over from one job to another job. In many cases the tenure of job gets over and workers remain unemployed temporarily till they get another job. ये जो गुटे जॉब आउट जॉब से जो से समयटा से जो टेम्परेरी दे रिमेन अनएम्प्लॉयड सेटा कोंती फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड बा आउट हम बुझुची जे इन केस ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम one region to another region मनकर लोक ओडिसा जिबे आसाम जिबे आसाम चाबे काम करिवे कि त समय लागबो त से जो ट्रांजिट पीरियड से जो दी ट्रांजिट पीरियड फॉर माइग्रेशन बा मूवमेंट फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस से टाइम पे दे रिमेन on a place. So frictional unemployment takes place because in an economy with the imperfect information about the job, about the search and matching is not smooth and there are frictional unemployment. So that they call mismatch between the workplace and the labor. So पहुंच पारो नहीं तो एटा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बात जाकोती हमको घर्षण सृष्ट बेकारी out of the structural unemployment takes place when there is a mismatch between the supply of labor and demand for different kinds of labor or jobs. For example, suppose the number of engineers and management professionals MBA students looking for job in India has been much higher than the available job. आम भारत वर्ष रे आमर आवश्यक होची लोक 500 कोटी माने इंजीनियर दरकार बा हमर एमबीए पिला दरकार किंतु हमर पिला पाठ पढि आस्तंते मत हजारे माने 1000 लाख दर तो हमर आवश्यक 1000 किंतु आवश्यक पड़ची मात्र 500 बाकी 500 पिला रहिले अनएम्प्लॉयड रहिले तो दिस रिजल्टेड इन a number of persons who remain unemployed though they are qualified for the job. So structural unemployment takes place largely due to the structural shift in an economy when amaro jete gote अर्थनैतिक व्यवस्था रे ढांचागत बा गठन संबंधी परिवर्तन बा जाकोते आकारगत परिवर्तन हेता है से माने से समय मन करो गोटे जॉब अवेलेबल अछि किंतु से जॉब रो स्किल दा जे नुआ पिलाटे आसुजी तार से स्किल दा नाही बा जण लोक गोटे अतीत रे गोटे चाकरी करथला पता से ते नुआ कंप्यूटराइज होची बा डिजिटलाइज होची से कंप्यूटर सिकी नाही तो ताक ट्रेनिंग न पड़ियो तो सेही जो माने से माने तार स्किल अछि दैट मिसमैच बिटवीन द लेबर ऑफ द पोजेस दिस स्किल एंड द फार्म रिक्वायर द न्यू स्किल ए जो तारतम्य पार्थक्य होची ताको मिसमैच बिटवीन द स्किल व्हिच द लेबर पोजेस and the skill which is required by the farms तो ताको करबो ना ताको पुनी से लोग ट्रेनिंग होवा पड़िबो काम सिखा पड़िबो ताको ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करे पड़े तापर से कि तार स्किल ता बढ़ला पर से जाके चाकरी जॉइन करिवो तो ए जो पीरियड से रहला अनएम्प्लॉयड रहला ताको हम कुछ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट माने जते गोटे अर्थनैतिक अवस्था रे आकारगत परिवर्तन होची बा ढांचागत परिवर्तन होची सेट किछि गोटे ज्ञान कौशल रे आ गोटे ज्ञान कौशल को जोया पड़िबो तेणु से लेबर बा से जो श्रमिक को नुआ कौशल शिखा पड़ो तापर जाके नुआ काम से जॉइन करिवो ए जो टेम्परेरी से जो एब्सेंट होची बा काम करि पारु नहीं ता से स्किल ता ही परनी से स्किल ता बढ़ला पर जाके से नुआ जॉब रे से जॉइन करिवो ए पीरियड ता से जो अनएम्प्लॉयड होची ता कोंती स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हम ता कोचो सो देयर इज a mismatch between the skill the workers possess and the skill which is required by the farm एटाला स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट साधारणतः डेवलपिंग कंट्री एसो देखा जाय जतरे गुटे इकोनॉमी इज शिफ्टिंग फ्रॉम एन एग्रारियन इकोनॉमी टू एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एट दैट टाइम the farmers they should be trained, they should be educated on the industrial knowledge or on the factory technique of production, how to operate the machine, then they will join the work. आउट होची साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आगु पढे कि केमती बिजनेस साइकिल रे मान जो रोची हमरो अप्स एंड गोइंग अप रे कुछ प्रॉस्पेरिटी एवं हमरो जोटा डाउन पीरियड को हम कुछ डिप्रेशन काई होची ना बिकॉज़ ऑफ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड तो एग्रीगेट डिमांड फॉल करछ जगु हमरो
प्राइस फॉल करछि प्राइस फॉल करे जोगो हमर प्रॉफिट फॉल करछि प्रॉफिट फॉल करे जोगो इन्वेस्टमेंट हो नाही आ कहिना जहा जिंस उत्पादन हे था बाजार रे बिक्री करनी दैट इन अनसोल्ड तेने जो अनसोल्ड रहिला त बिक्री होवा पई से अधिका नुवा आउटपुट प्रोडक्शन करिबा नाही तेनो आइदर से शटडाउन करियो शटडाउन द फैक्ट्री करिबा बा reduce the less output तेनो when the investment decreases because of not producing more sir कहू छी ना the factors of production they remain unaffected तेनो डिप्रेशन समय रे डिमांड रो ह्रास जोगु दर ह्रास जोगु लाभ ह्रास जोगु नुवा उद्योगपति बा एंटरप्रेन्योर माने से माने उत्पादन करबा चाहते नहीं तेनो से जो फैक्ट्री रे से माने माने अनएम्प्लॉयमेंट हे जाय हमर ड्यू टू फॉल इन प्रोडक्शन सम पीपल सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रिमेन अनएम्प्लॉयड तो सेटा को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आउ किछ हे परिबो मन कर तो ड्यू टू एनी रीजन हमर किछ मिलु नहीं मेटेरियल मिलु नहीं रिसोर्स मिलु नहीं सेटा मत अनएम्प्लॉयड रो इसको से तो साइकिल होची हमरो जो साइक्लिकल बा जाका हम चक्र क्रम रे आवर्तन समय रे हम जत अप्स एंड डाउन गुड इकोनॉमी गति होची तनो ड्यूरिंग डिप्रेशन से एग्री डिमांड रो पतन जो सेतले हम अनएम्प्लॉयमेंट मध्ये अधिक वृद्धि पाते बा एम्प्लॉयमेंट कमी जाए बा अनएम्प्लॉयमेंट वृद्धि पाते तनो ये सब होची हमरो वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आउट हे परिबे आपण जानते जे हम को डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट बा एज गुड अनएम्प्लॉयमेंट से जाओ आज आर तो आपण बुझिबी जे किमती द सप्लाई करो ऑफ लेबर सप्लाई करो ऑफ लेबर मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट मूव्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आउट डिमांड फॉर लेबर इज मेड बाय फार्म्स और प्रोड्यूसर्स और एंटरप्रेन्योर्स तो कहना सप्लाई करता कहीं को ना समस्त लेबर मान चाहती जे when the money wage rate is higher they will supply more labor माने एट हायर नॉमिनल वेज रेट रे हमर अधिक लोक काम करे पे प्रस्तुत थिबे त सप्लाई लेबर बढ़ि जाए आ जदरे कम वेज रेट थिबो सेतरे लेबर माने से माने बा वर्कर्स माने कम आसीबे टू वर्क तेन कहदिबो so कहदिबो जे there is a direct relationship between or positive relationship between the quantity supplied of labor and the wage rate ba money wage rate out asbo माने out demand करबो ना demand for labor is made by the farms made by the producers so समा चाहिए जे when the money wage rate is higher they will try to employ less number of laborers or workers जतर बाजार रो मजूरी दर बा wage rate कम थिबो सेतरे they will try to engage more laborers more workers तनो there is an inverse or a negative relationship between the demand for labor and the wage rate तो ना हम यदि वो y axis से vertical axis हम यदि नबो wage rate नेबो एवं हम यदि if you plot the quantity of labor demanded on the y axis horizontal axis तला हम देखो the demand curve for labor is called downward sloping हम नबो तनो the labor force in an economy is less than the total population एटा हम बुझिबो आता तब हमें आसको जे एठी आसे फिलिप्स कर्व अगर बुझी छी जे फिलिप्स कर्व्स नेम्ड आफ्टर मुझे बुझितली जे फिलिप्स कर्व इज नेम्ड आफ्टर अल्बन विलियम फिलिप्स द न्यूजीलैंड born economist who later on became the British economist and professor at London School of Economics से चाहिले 1958 रे से देखले हम एप्टिका स्टडी देखले that there exists a steady or stable and inverse relationship between the money wage rates and the rate of unemployment से देखले तेन से सिंपल कोड लिनियर इक्वेशन ले जा होची w is equal to a minus bu it w stands for rate of wage increase
and A, B are the constants, and U is the rate of unemployment. So Phillips found that there exists a stable and inverse relationship between money wage rate and the unemployment rate. So ମୋର କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ rate of unemployment is equal to unemployed persons divided by the total labor force. ଆଉ इन्फ्लेशन रेट केमिति हम ये करा जाए हम जानछो थ्रो एवरेज प्राइस इंडेक्स इट मे बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इट मे बी हॉर्स प्राइस इंडेक्स बाय एवरेज रेट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस जनरल प्राइस लेवल तो एटा हम देखियो देखंतु एठी जो इक्वेशन में पढलु ताले कोन हला ना द मनी वेज रेट इज इक्वल टू ए माइनस बीओ बाय क्वाजो there exists a stable and inverse relationship between the W money wage rate and the U means unemployment rate, with the implication that a lower rate of unemployment is associated with a higher rate of wages. से बोलते जेतले वेज टा अधिका थिबो सेतले अधिक मात्रा रे लेबर माने काम करे पे इच्छा करथिबे हैला आउ सो ता माने हमें देखो हाई रेट ऑफ वेज रे अधे लोग काम कर पाथिबे बुझो ने तो हम जते अधिका वेज रेट होची सेटा हमर प्राइस राइज करची प्राइस राइज माने हमर इन्फ्लेशन होची तो हम जदी इन्फ्लेशन बा प्राइस राइज देखिबो बा हायर वेज रेट देखिबो सेते कोन होची लोअर रेट ऑफ unemployment is associated with the higher rate of wages. ये देखो तो हम ये देखा जो ता परवर्ती अवस्था रे फिलिप्स एंड मेनी अदर इकोनॉमिस्ट दे फॉलो दैट सूट एंड अटेम्प्ट सिमिलर एक्सरसाइज फॉर अदर इकोनॉमी ना it देखो तो inverse relationship between the unemployment U and the wage rate जेतले वेज रेट टा बढ़ जाउछ सेतले अनएम्प्लॉयमेंट टा कमी जाउछ आ जतरा वेज रेट टा कमुची माने जतरा वेज रेट टा कमुची सेतले अनएम्प्लॉयमेंट टा बढ़ुची आ तो बुझ दोची there is inverse relationship between the wage rate and unemployment rate. So, with the implies that a lower rate of unemployment is associated with higher rate of wages. हम जतले wage rate अधिका थिबो सेतले unemployment टा कमिबो आ जतले lower rate of wage थिबो सेतले unemployment टा higher थिबो एता कोनी the inverse relationship between the unemployment and the wage rate. So this has led some economists to refine the simple equation by Phillips and use the inflation, the rate of increase in prices. Instead of wage rate increase, they have used the general price level. So in many cases, the scatter plot of variables appear to be convex to the origin. The empirical study reinforce the inverse relationship between the rate of inflation and the rate of unemployment, Phillips curve. So ये जो फिलिप्स कर्व रो it has some policy implications एटा हम देखिबा आगे हम ये देखिबा ए देखो on the y axis বা vertical axis रे we have measured or we have plotted the real money wage rate R1 R2 and on the x horizontal axis we have measured the unemployment rate U1 U2 देखो तो सब at the wage rate R1 देखो तो the economy is at the point of A where the unemployment rate is U1 कहीं कि ना जितने कम थिबो मजदूर दर देखो तो सेतले the farm will demand more. Okay, माने they will demand ये देखो तो
at the low rate of wages, wage, the unemployment rate is U1. When the money wage rate increases from R1 to R2, the economy moves from point A to B, unemployment कमी जाउछि तो एटक आम एमती बुझी पारू दे आमर जो इट रोची सो देयर इज ए स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द राइजिंग वेज रेट एंड द राइजिंग प्राइस लेवल एदमतो तेनो Phillips curve in many economists follow the suit and they follow the path of William Phillips. So there exists a stable relationship between the rising wage rate and the rising price level. This led to some economists to refine simple equation by Phillips, and they have empirically studied that the inverse relationship between the rate of inflation and the rate of unemployment are there. Okay. Phillips curve becomes an important tool for policy analysis. At a high rate of inflation or high rate of money wage rate, the rate of unemployment will be low. An economy cannot have both low inflation and low unemployment. So when the money wage rate was R1 at that time, the unemployment rate was U. Suppose man amaro मजूरी होची जहाँ छी मानको 3% मजूरी राइज करची from R1 to R2 को सेतरा हमर unemployment कमी जाउची कहीं ना आम मजूरी जो अधिक पास काम करेंगे तो कौन हम ना हायर वेज रेट रे अधिक लोक काम कर गेट एम्प्लॉयमेंट माने आमर अनएम्प्लॉयमेंट कमी जामती जो लो रेट ऑफ मजूरी होची सेते आमर माने माने अनएम्प्लॉयमेंट होची अधिक होची कहीं ना एटा अपन देखंतु सो माने से कोची जेतले इन्फ्लेशन राइज करची बा प्राइस राइज करची जेतले प्राइस राइज करची बा इन्फ्लेशन राइज करची सेते बेले टू गेट प्रॉफिट the producer they will want to employ more number of laborers होची कहीं ना to take the advantage of profit or to catch profit they want to increase the level of employment so higher rate of wage rate they'll increase the employment increase माने increase the employment माने increase the employment माने होची reduction in the unemployment rate है ना तो with the rise in the money wage rate और money wage rate rise कर माने से मत price मत बढ़ी कहीं कोटी because it lead to cost push inflation तेनो at a higher rate of when the money wage rate rises from R1 to R2 सेतरा हमरो unemployment कमी जाउची U1 to U2 कहीं ना मुझे हाई रेट ऑफ जेतले मनी वजेट बढ़ुची कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ुची सेतले प्राइस बढ़ुची प्राइस बढ़ुची प्रॉफिट बढ़िबो तेनु जे प्रोड्यूसर से चाहिबो अधिक एम्प्लॉयमेंट दबो अधिक एम्प्लॉयमेंट माने कम हबो अनएम्प्लॉयमेंट कम जो हम जो उल्टा देखिबा व्हेन दी मनी वेज रेट फॉल्स फ्रॉम R2 to R1 the economy moves from B to point A. Tamane hochi na with the decrease in the wage rate, price will also decrease. That the price that decrease karibo, the producers or the farms mane they will
try to employ less. When they try to employ less number of inputs माने तुम्हारा unemployment टा बढ़ी जाओ. So it increases from U2 to U1. तो ये जो inverse relationship between the unemployment rate and inflation has been explained by Phillips, and subsequently it act as a policy implication. कहीं ना एक फ्रेश कटा हमको सूचौची जे government should choose any combination of inflation, either of combination A नब कि B नब. देखो तो A point रे जदि इकोनॉमी जो रन करछि बा जदि इकोनॉमी जो रन करबो ताले एटा होछ कोन ना अधिक मात्रा रछि अनएम्प्लॉयमेंट रछि कम होछि वेज रेट बाय इन्फ्लेशन. आ जदि बी कॉम्बिनेशन को जदि सरकार जदि अडॉप्ट करिवे बा जदि फार्मर जदि अडॉप्ट करिवे बी पॉइंट रे ताले एट द हायर रेट ऑफ money wage rate or high rate of prices or high rate of inflation, they have to reduce the unemployment rate. तेणु माने ए पॉइंट कौन होची ना एठी हमरो अनएम्प्लॉयमेंट अधिक होची किंतु प्राइस टा इनफ्लेशन टा कम होची. बी पॉइंट कौन होची ना हम जतले अनएम्प्लॉयमेंट को कमेव चाहूछु माने ए पॉलिसी गोल भावे जब आम समाज रे अनएम्प्लॉयमेंट कमी दो सेतरे हमको किछि प्राइस राइज रो जो चेंकाटा हम सहायक पड़ो बुझना ना. तेणु दी एक संगरे वी कैनॉट हैव लो इन्फ्लेशन और लो अनएम्प्लॉयमेंट. हमको जदि लो अनएम्प्लॉयमेंट को आने पड़ो ताहले हमको इन्फ्लेशन टा सहायक पड़ो. हमको जदि कम इन्फ्लेशन सहायक पड़ो ताहले हमको अधिक अनएम्प्लॉयमेंट टा क्रिएट करिया पड़ो. तेणु यही क्रम रे हमर पॉलिसी इम्प्रेस होची that the economy, it also policy impression. The economy cannot have the economy cannot have low inflation or low unemployment at a time. The policy influence कोची it results that an economy cannot have both low inflation or low unemployment situation. So in order to contain or to control unemployment of the economy or the firms or the government has to tolerate high rate of wage increase or inflation and vice versa. Thus Phillips curve justify the discretionary stabilization policy of the government. माने गोटे सरकार इच्छा मूलक जो स्थिरता नीति आने पड़ो एटा सोचौचे जे सेठी माने इट इज अप टू द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी और द गवर्नमेंट whether to go for having low inflation or low unemployment. हम जदि लो अनएम्प्लॉयमेंट आने पड़े हमको हाई इन्फ्लेशन सहायक पड़ो. हम जदि लो इन्फ्लेशन सहायक पड़ो हमको हाई अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन टा खन भोगिया पड़ो. तेणु कहते दैट इज ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो ए डायग्राम रे मध्य एक मु आतो कह दोची दैट ट्रेड ऑफ बिटवीन combination of unemployment and wage rate or inflation, out of combination of the high wage rate, high inflation and low unemployment. तेणु गोटे इकोनॉमी को से एटा को चांस ग्रहण करा चाहूची ताले ताको बीटा सैक्रिफाइस करे पड़ो. से जो चाहूची दे माने कम आनियो प्राइस लेवल ताले ताको अधिका अनएम्प्लॉयमेंट भोगिया पड़ो. बा ताको जो कहबो ना से जदि चाहबो ना मतलब कम अनएम्प्लॉयमेंट को ता लक्ष्य पूर्ण करा चाहूची ताले ताको अधिका प्राइस लेवल भोगिया पड़ो. तेणु एटा को ट्रेड ऑफ बिटवीन the unemployment rate and the wage rate or the inflation rate. आउट आपण इतिहास हो जे ए देखो तो एठी हमर तीनटा अछि कोन जे ना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट कुड फॉलो an expansionary monetary policy which leaves more money in the hands of the people. Such a policy during depression, the rule expansion monetary policy
because such a policy may accelerate the rate of inflation while lowering the unemployment. कहीं ना हम जब monetary policy जब अधिका करिवो हमरो मान the rate of interest will be low हो. With the lower rate of interest, the investors will produce more and output more. When they will produce more, they will engage, they will employ more factors of production. So employment in the economy will rise. It means unemployment will fall. Ulta have, conversely, during the period of high inflation, the government could follow a contraction economic policy. Fiscal policy है पर कि monetary policy माने एठी money supply को कम करना पड़िबो और the public expenditure कम करे पड़े. Government has to reduce the public expenditure, public borrowing by imposing heavy taxes through fiscal policy, and government has to reduce the money supply. हेले कौन हबो ना it will lead to reduction in the purchasing power of the people and reduction in the prices or reduction in the inflation rate, and the cost of such a policy however was supposed to be higher rate of unemployment. Thus, economists believe that there was a trade-off between inflation and unemployment. The government could choose any combination of inflation rate or unemployment rate depending upon the slope position of the fiscal. Our কথা হচ্ছে this second out important peculiar অবস্থা আসিଥିଲା 1970 রে 1980 রে when the Phillips curves could not work well. So during 1970 and 1980, the Phillips curve implication could not work well because during such period, the most of the economies of these Latin American countries, etc., so they suffered from both high inflation and high unemployment rate. Mane high unemployment ko high. So instead of this, so the Phillips curve instead of taking the downward sloping into the upper sloping, very achota. As such unemployment increased, there was a lower level of output implying stagnation in economic growth. कहीं ना देखो तो हमें जो unemployment जब बड़ी होती है माने हमारे employment कमी होती है, employment कम जब पहुँचे ना हमारी economic output कमी होती है. शेष समय हमारे मध्य कौन होती है ना माने stagnation output बड़ी बारूनी किंतु price rise करती. So when government tried to follow Keynesian policy prescription of higher government expenditure so as to increase the aggregate demand, the rate of inflation accelerated. Inflation बढ़ी होती. Thus, that what most countries experienced was stagflation. Stagflation होती a combination of stagnation and inflation. So the reason for stagflation was found to be supply shocks due to petroleum oil crisis in the Arabian countries in the year 1973 and 79, and this stagflation prompted economists to explore further into the region for stagflation. माने stagflation is just stagnation, माने output बढ़ुनी, माने हमारो सेठी inflation बढ़ची, unemployment high होची. ये जो माने unemployment high हुआ जो कौन होची ना हमारे employment हो जो output बढ़ी पाउने. तो एठी माने high inflation is associated with low or stagnant in output. Then I'm talking stagflation, stagnation in output and price rise in stagflation. It is like. So, तापरे आमे पढ़िबा जी आउट विषय नबा जे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपण बुझौची जे केमबे हमरो when some workers are in the transition process from one job to another job, fiscal unemployment. Similarly, a fraction of or a group of workers cannot be employed because of mismatch between the skill they possess and the skill required by the firms. Structural unemployment. And in view of the above, employed two types of unemployment. In view of the above two, a new concept has been termed in the natural rate of unemployment. So this, which was introduced in the year 1960 independently by Milton Friedman, Edmund Ferris, the two Nobel laureates in economics. The two Nobel laureates in economics, Milton Friedman and Edmund Phillips. A natural rate of unemployment takes into account friction and imperfection in the economy
and assumes that it is natural for an economy to have certain fraction of its labor force to remain unemployed at any point of time. We observe that any unemployment that is not natural could be due to business cycle or due to defect in the or bottlenecks in the economic system as a whole. For empirical purposes, the natural rate of unemployment is the total frictional unemployment and the structural unemployment. ତେଣୁ ଆମର ହେଲା ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି it includes both fictional unemployment and the structural unemployment. ଆଉ ହଉଛି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି the expectation of economic agents of the households, farms and the government also very important for future economic environment which play a major role in the 7% of the Phillips curve. The economies it बुझा पड़ियो the economies or the economic agents like households, farms and government expectation about the economic variables like prices, demand, government and take decision. केमती का माने गुटे हमर गुटे एक्सपेक्टेशन हम आशा करिबा भाबिबा बा हमें आशा करूछु आकांक्षा करूछु जे आगु प्राइस राइज करिवो तेणु आम एवं जिनस न बिक्री कर फ्यूचर बिक्री करूँ आगू आमर कौन ना मजूर दरटा बढ़ीज तेणु आम से अनुसार आम कौन मजूर दर बढ़ानी आगू को आम बाध्य कर जी एम्प्लॉय से मजूर दर बढ़ तेणु इफ ए प्रोड्यूसर बुझे आगे आस इन केस ऑफ एन कंज्यूमर सो यू सी हाउ द एक्सपेक्टेशन it takes an important role in the decision making or decision making in an economy. During rainy season, when you move out or you look at the sky or listen to the weather forecast, if you expect that it might rain later in the day, you carry an umbrella. आमे भाबे जदि आज ऊपर वर्षा होतला आमे छता नहीं भारियो when I'm expecting the possibility of rain I'll carry my umbrella with me. Or if you expect that you may have to stay back or come to Jimmy so you make necessary arrangements. So in a similar way, I'm the economic agent producer consumer money. Seven of them form also expectation about the economic variables price. If a producer expects that the demand for his product will increase in the coming years, he would plan to increase his productive capacity. से देखुची दे when the producer से भाबुची जे मोर मोटे नुआ साबुन तैयार करछि मो साबुन को आगु को बहुत डिमांड हबो तेन से कोन करिवो he will try to increase the output जे साबुन तैयारी बढ़ेबो एवं तार फैक्ट्री रे जो अछि प्रोडक्ट कैपेसिटी से बढ़ेबो by installing new machinery by employing new persons to produce more or he may consider several factors such as possible advances in production technology that might make the current installed machinery obsolete but पूर्ण हेतुवा machinery बदल से नुआ machine बसिबो or appearance of a new substitute तार ता द्रव्य को गुटे प्रतिद्वंदी नुआ द्रव्य तार प्रतिबदल द्रव्य बाजार आसिबो तो से ता मध्य आशा करछि से अनुसार will make say arrangements to face this competition. तेणु सिम्पली माने changes in the industrial labor, trade union or trade and tax policy of the government also affect the revenue income of the cost of a producer of the farm. Similarly, the political instability like wars or the trade embargo by the other countries and the changing international trade or any changing international relation due to suppose say Ukraine war or say Middle East war by Israel. तो ना ये सब घटना लोगों जो ना इकोनॉमिक एजेंट से हाउसहोल्ड है पारे बा कंज्यूमर है पारे बा से जने प्रोड्यूसर बा फार्म है पारे बा गवर्नमेंट है पारे दे विल टेक नेसेसरी अरेंजमेंट ये बोलছি तेणु हमरो एठी होची जे सबले माने प्रत्येक लोक से लेबर हो कि प्रोड्यूसर हो आउट उदाहरण देबी सपोज वर्कर
she expect kala ki demand for labor will be somewhat higher in the coming future or future month. So he se kon karibo na he may demand for a hike in his salary with his employer. On the other hand, if the demand for labor is on the other hand is going to decrease, so he would like to retain his job and may not ask for any rise in and will not ask for any rise in the wage or salary. So if the worker expects that the price of goods and services are going to increase faster or there is going to be an inflationary situation in future, he would demand for higher wage rate so that the real wage rate is maintained. The expectation am economy ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ करे to take any economic decision either by the consumer, by the farm or by the household or by anybody. এবং এই जो अच्छी एक्सपेक्टेशन को आमने ताको हमर फॉर्मूला रे हम ताको एक्सप्लेन करछु जे पीटी होचे माने the expected price in the present time period. PET minus 1 is equal to the expectation of the price level in the previous year. लैम्बडा into PT1 minus P or that it's हमको बुझे पड़े according to the माने adaptive expectation are of two types उठला adaptive expectation और rational expectation. Man in case of adaptive expectation it देखो it बुझाइछि there are two major limitation of the adaptive expectation se ko hypothesis konchi and the model assumes that the people do not learn from the past mistakes and they adjust current year expectation by lambda times the forecast error, thus they consistently underestimate the rate of inflation if the actual inflation rate is more than the expected inflation tak kochu माने he is underestimating the rate of inflation माने को तो से भाबी था जे 3% इन्फ्लेशन हबो किंतु देखला को प्रकृत हला 6% हला ताने एठी कोन हला ना he is underestimating the inflation. Similarly, people can also consistently overestimate the rate of inflation if the actual inflation rate is less than the expected inflation. मान को तो लोक माने भाबी थिले जे आशा वर्ष को हमर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हो 7% किंतु प्रकृत हेतला हेला 4%. तो एटा को दिबो जे सेमाने दे ओवर एस्टिमेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. तेनो एठी को दिबो दे that the model this ए जो हला हम जा कहूछु adaptive expectation it does not it assumes that the people base their expectation on past information only. It does not take into account the present and future events. For example, under adaptive expectation, when the government pursue an expansionary monetary policy, people do not expect that inflation rate will go up. माने लोगों को गुड इंडिपेंडेंट एटीट्यूड आसी এবং similarly when there is a natural disaster such as a drought, people do not expect that the aggregate supply will decline or price will go up. माने लोकांकर माने when they do not react or ताकर एक्सपेक्टेशन हो नहीं बेसी तक सिकुनाती एटा को आजिबो माने they do not learn from the past experience एटा को आजिबो ना कोन ना माने जहां they will adapt कर दिबे से सही दिबे without taking any necessary arrangement that कोन adaptive expectation. How is rational expectation goes now in case of rational expectations, hypothesis assumes that the household and the farms they take decision on the basis of the best possible information available to them. Thus the people they consider not only past trend but also present and expected future events. So past to sikoti man they learn from the past, they think about the present and they hope for the expectation for the future. So जो माने जो क्षेत्र रे एक्सपेक्टेशन को आमे बेसी कॉन्शियस होछु बेसी जागृत होछु आमे से पास्ट रो सिखुछु
बर्तमान से हम स्टेप नौ आगु मध्य हम स्टेप नबु से क्षेत्र कोन होबे ना अकॉर्डिंग टू दिस rational expression people learn from the past mistake people may be wrong in their forecast sometimes but on an average they will be correct से जो स्टेप नेबे से करेक्ट स्टेप नेबे तो सिंपल टर्म्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन पीरियड ऑन टाइम पीरियड करंट पीरियड t is given by ये देखो तो RTE is equal to RTN এটা হচ্ছে ET in the above equation ET is an stochastic error with expected value of 0 माने error value of 0 but a correct error of expectation while some people may have positive error in their forecast others will have negative errors so there are two versions of the rational expectation hypothesis weak and strong in the weak version it is assumed that the people have access to limited information but they make best use of the information let us take a concrete example you buy wheat flour or atta every week for household consumption you do not know the relative price and nutrient levels of all the brands of wheat flour available in the market with limited information available to you. However, you usually stick to the same brand and maybe the same shop without knowing that other shops are charging a lower price. So, in the strong version of rational expectation hypothesis, it is assumed that the people have access to all information. Decisions taken are based on all information in the past, and thus their expectations are equal to actual values. So the error is very negligible. Any error in forecast is due to unexpected other development, but the steps they taken become correct. Usually it's not expectation. तो आसना हमें वर्तमान ये जो expectation how it augmented the Phillips curve এটা বুঝেবা আমি এটা বুঝুছি মানে in the Phillips curve দেখা যাচ্ছে the Phillips curve discussed earlier could not explain the stagflation in an economy. For explain the stagflation, we need to bring in expectation into our analysis. Let us explain both the adaptive expectations and the rational expectations have important impression for Phillips curve. The Phillips curve and the adaptive expectations. Suppose you see, suppose workers are usually enter into contract with the employer regarding their salary for the certain time period. During the contract period, salary cannot be negotiated. It can be changed only after the contract period is over. So as the workers are aware of these conditions, they incorporate expected inflation into their contract. ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ସହିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଗକୁ ଯଦି 3% ରେ ଇନଫ୍ଲେସନ ରାଇଜ କରୁଛି ବା ପ୍ରାଇସ ଲେଭେଲ ରାଇଜ କରୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ they will negotiate with the wage rate in such a manner that the real wage rate does not decline due to price increase. So ସେମାନେ 3% price rate को ताकर ट्रेड यूनियन रे नेक सेंसन मौजूदता एबे स्थिर करिवे. For an expected inflation rate is suppose R1%. Suppose the Phillips curve is given by short run PC1. If you it short run PC1 এবং the initial equilibrium is point A. At that point, the economy is having U star amount of unemployment rate and R1 rate of wage rate. And suppose what happens, there is a possibility of trade-off between the inflation and unemployment along the curve SRPC1. If there is a higher inflation, then real wage will decline because the nominal wage cannot be increased due to existing contracts. Consequently, farms will employ more labor, thereby leading to a decline in unemployment. Suppose the government pursue an expansion fiscal policy, government expenditure will increase, taxes will be decreased, which will boost the aggregate demand curve, and as a result, the aggregate demand curve will shift. It will lead to an increase in the investment and to some extent increase in the demand for labor. So in either case, there is an increase in inflation from F to R to 6%. R to 6%. So it बुझा गला जे the inflation and unemployment along the curve SRPC आगरे थिला हमरो if we move from
on this SRPC curve from A to B, at a higher rate of wages would reduce the employment. Unemployment money at a higher rate of wages were to give more employment, and the unemployment will be reduced from U star to U2. So equilibrium at point B is temporary. Workers very soon realize that there is an unexpected increase in the inflation rate. So in order to compensate for the price rise, workers will demand for higher wages for their trade unions. It will lead to a shift in the Phillips curve from SRPC to short-run Phillips curve 1 to SRPC short-run Phillips curve 2, and the new equilibrium point will be established at point C. So now the new equilibrium point will be established at point C. Consequently, the inflation will be at R3. It means the inflation will further rise from R2 to R2, while the unemployment will be at the natural rate at U. U star is called the natural rate of unemployment at this point of. Okay. So now we have explained that how the economy moves from point A to B due to rising the money wage rate, and any further rising the money wage rate, again the economy will move, or the Phillips curve will shift from SRPC short run Phillips curve 1 to short run Phillips curve 2, and the new equilibrium will be established at point C. So how this expectation augment or it push the Phillips curve upwards or cause the shifting in the Phillips curve to one level to another level. So this is all about the meaning of Phillips curve, the meaning of unemployment and the various types of unemployment. आम एक पढ़िलु जे किपरि भाबे Phillips curve टे हमरो जो बेकारी हार एवं हमरो जो बाजार दर भितर एक उल्टा एक नेगेटिव बा विपरीत संपर्क को सूचा दिए एवं आम एवं देखलु कि किपरि विभिन्न प्रकार हमर बेकारी अछि गोटला फीसनल अनएम्प्लॉयमेंट गोटे अछि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और अछि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ से जान का कि जदि गोटे राष्ट्र जदि से चाहे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिवो ताले ताको अनएम्प्लॉयमेंट को अधिक आश्रय पड़िवो आ जदि गोटे राष्ट्र को देखा पर से जदि अनएम्प्लॉयमेंट कमे पड़िवो ताले ताको एक्सपेंशन पॉलिसी करे पड़िवो बा एम्प्लॉयमेंट इनक्रीज करे पड़िवो एपटे हमर किछ प्राइस राइज करे पड़िवो तणो गोटे काटे देखिवो से जदि इन्फ्लेशन कंट्रोल करिवो ताले तार बेकारी बढ़ियो ता जदि बेकारी कमे को से जो चेष्टा करिवो एपटे इन्फ्लेशन सही पड़िवो तणो एका थरे ताको दुटा को से अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी समस्या कम परिबनी कि मुद्रास्फीति कंट्रोल करि परिबनी गोटे को हला आउट से सही पड़ियो एटा होची Phillips curve हमर तार मेन ऑब्जेक्टिव बा उद्देश्य थैंक यू वेरी मच